Hey and guys, yours. this is Shantanu Maheshwari, and you guys have been watching me in something or the other, be it TV or last film that I did, Gangubai, जिसमें मैं अफशान था, जिसमें हंस वाला सफेद बहुत famous हुआ था, and मेरी जान the song. So yes, that's me. I've come up with a new show called Campus Beats on Amazon Mini TV, and here we gonna have a lot of conversation with Fozia, and yes, stay tuned. आप समझ गए होंगे कि मैंने व्हाइट क्यों पहना है. यस Yes. सफेद आप पे वाइट बहुत जच रहा है और ये जो आपने हंस वाला सफेद के साथ जो आपने दुपट्टा दुपट्टा लगाया है वो आप पे बहुत सूट कर रहा है एंड लुकिंग सो प्रेटी. So let's start with गंगू only. मेरा सवाल ये है आपसे कि जब आपको गंगूबाई का ऑफर आया था, how did you feel? ऑफर नहीं आया था मुझे. लाइक आई हैड टू गो थ्रू सीरीज ऑफ ऑडिशंस एंड मीटिंग्स एंड लुक टेस्ट एंड देन इट फाइनली हैपेंड कि ओह आई एम डूइंग दिस. बट ये था कि at least I'm getting a chance to be in front of sir. So apna 100% देना. That is what was there in my head, and that is what I did the entire time. And then finally when it happened, Mahajan ma'am had called me and she said ki you have got the part. And I was like, I was blank because I thought that she's joking. She's not serious. She's playing a prank, and I don't like these kind of pranks. So, but yeah, I mean, so बहुत ही subtle reaction था because I was not expecting anything. Till the time I was on floor, I was like, पता नहीं, कुछ भी हो सकता है. So that was my So काफी मेलोड डाउन था. ऐसा कुछ ये कर लो दुनिया मुट्ठी में या फिर मैं भाग रहा था पागल जैसे, वैसा वाला नहीं था. So yeah. So how was your experience with Gangu, Alia Bhatt? Amazing. She is a fabulous actress. सब जानते हैं, but she's a very good human also. I think she's very supportive. She's very helpful, and she has been helpful throughout the process because मेरे सीन से उसी के साथ थे. So by default we had to be comfortable with each other, and I think she being a superstar, she didn't have any kind of tantrums or more than anything, like she was approachable. So यहीं पर मैं आपसे एक सवाल करूंगी कि आपके और आलिया के इंटीमेट सीन्स भी थे. So were you हाँ. nervous? Were you uncomfortable? She didn't have those kind of superstar attitude or tantrum on set. She was that character. She was in the space where she wanted to collaborate and help in terms of कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते. So I think we were pretty much sorted that way. Have you ever felt during the shooting intimidated because it's Alia Bhatt film, it's Sanjay Leela Bhansali film? सर के लिए जो रोल है ये मेरे लिए जो उन्होंने लिखा है, आई बी एबल टू डू जस्टिस टू इट बिकॉज अगेन इट्स माय फर्स्ट फिल्म एंड इट्स विद सर. So I mean stakes are very high for me. So it was very important for me to hit the chords right, what sir was expecting. So गंगूबाई के बाद आपको ऐसा लगता है कि लाइक आपका करियर ग्राफ एकदम ऊपर गया है? So do you think that लोगों की expectations आपके साथ बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं? Yes, definitely buddy, and I'm happy with that because I was wanting that expectation to happen long time back, कि अब वैसे टाइप के रोल्स मिले, कुछ अलग रोल्स मिले. एंड गंगूबाई रियली हेल्प मी इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग दैट होल स्टीरियोटाइप कि ये सिर्फ डांस बेस्ड रोल्स ही कर सकता है. सो आई थिंक दैट रियली हेल्प मी एंड पीपल सी मी इन अ डिफरेंट आई. they want to work with me, so now I have more choices, I have better choices earlier जो नहीं थे. So एक डेफिनेटली वो जब थप्पा लगता है भंसाली प्रोडक्शन का एक्टर है एंड सर के साथ काम किया है. His debut has been with Sanjay sir opposite Alia. So definitely that weightage does come in. So now let's talk about campus beats. Now this is a Yes. show of college and dance. Youth के ऊपर है. So Yes. what made you sign this show? What was different about this show? Because आपने दिल दोस्ती डांस ऐसा शो एक और भी करा हुआ है. It's very different. I mean, it's very different. I know the campus life and dance part is similar, but yeah, I mean, the story, I think it was a need of the hour, and I enjoy watching these kind of shows. So मेरे लिए ऐसा था कि why are people not making this kind of show? So kudos to Amazon Mini TV for approving this kind of show because this is a breezy show. It's a show which is not very dark. At the same time, it's very
young, Hmm. and you will love to watch it because it has every element to it, be it Hmm. thriller aspect of it. The story has a murder mystery, you have campus life, you have college romance, you have friendships, and you have dancing. So that is something I have been wanting to do for a very long time now. And for me, because I have done Dil Dosti Dance, so it was a big Hmm. responsibility ki main kuch alag lekar aaun. And this Hmm. has that alag factor because this is present scenario, and Hmm. social media has heavy influence on today's young generation and youth. So I think all those factors have been taken care of, and I just felt कि इस प्रोजेक्ट का पार्ट डेफिनेटली बनना चाहिए. मेरा जो कैरेक्टर है वो बहुत डिफिकल्ट है. दैट इज समथिंग आई हैव नेवर प्लेड. बैड बॉय Hmm. विद गुड हार्ट, एंड आई टुक लॉट ऑफ टाइम टू गेट इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर, टू गेट इनटू द थॉट प्रोसेस ऑफ द कैरेक्टर. एंड biggest plus I would say, makers. I mean, Hmm. Palki Malhotra is the maker, and she comes up with crazy scripts. She comes with Hmm. crazy scenes and amazing stories, and she has a different kind of an understanding when it comes to youth genre. तो आप प्रीमियर पर जाते हैं अपने लाइक पेरेंट्स को लेकर, एंड जब आपके रिव्यूज आते हैं तो आप बताते हैं मॉम डैड को फोन करके कि ऐसा रिव्यू आया है? प्राइमर्स में तो मैं नहीं जाता मॉम डैड को लेकर, बिकॉज मेरे को लगता है कि मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगा किसी और चीज को लेकर. आई वेरी गेट मेरे लिए ऐसा रहेगा कि उनके साथ सब सही होना चाहिए. दे आर बीइंग हम्म. ट्रीटेड वेल, दे आर सीटेड वेल. सो आई विल नॉट बी एबल टू बी अ गुड होस्ट. वो मुझे बताते हैं कि अरे इन्होंने भी देखा है, उन्होंने भी देखा है, एंड पीपल हैव रियली अप्रिशिएटेड यू. सो आपकी कॉलेज लाइफ कैसी रही है? पढ़ाई वढ़ाई में तेज थे आप, या फिर लड़कियां ताड़ने में पटाने में थे? नहीं 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 नहीं, मैं बहुत आई थिंक आई वाज टू फोकस्ड इन माय कॉलेज डेज. बट मेरी कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी गई है, बहुत डांसिंग करते हुए गई है, बिकॉज आई वाज अ कल्चरल स्टूडेंट, cultural quota student, so I had to dance for my college हम्म. and represent हम्म. college. And I loved it. I got to learn so many uh, like I got to learn dance in a very different manner because मैं Calcutta से आया था मुंबई to get into studies and everything. और हम्म. ये दूसरा ही कुछ सीखने को कुछ मिला, अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बनाए. So the city was very new for me. The working in the city was very new for me. So college life तो बहुत अच्छी रही है. And then इन सेकेंड ईयर आई गॉट दिल दोस्ती डांस, तो एक और कॉलेज लाइफ जीने का मौका मिला. सो हम्म. वहां पर रोमांस सीखने को मिला, आई वुड से. हम्म. बाकी whenever I used to go for events and festivals जहाँ पे हम डांस करते थे, तो वहां पर एक अलग चेयरिंग मिलती थी, एक अलग स्वयं का well wishers आते थे. And then people used to appreciate Shantanu and as well as our whole crew, हम्म. बिकॉज हमारा क्रू भी काफी फेमस था. SSDC बोलकर हमारा डांस क्रू था उस हम्म. समय. सो वो भी काफी फेमस था. So yeah, I mean the college life has really been a lot of dancing, learning, because I was already doing D3 by my second year. So yeah, and then that's नो where I फ्लर्टिंग? found my passion for acting. Flirting नहीं हुआ यार मुझसे. As I said, I was too focused. I had to do something because the city was new. So for me, it was like कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है. टीचर पे तो क्रश हुआ होगा, लाइक दैट मैं हूं ना वाली वाइब तुम्हें जो मैंने देखा, वो जब जुल्फे उड़ी होंगी वो नहीं, कभी नॉट हुआ? रियली. नहीं, वो नहीं हुआ यार मुझे, मेरे साथ. आई नो इट्स डिसअपॉइंटिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी लाइक, आप एक्टर भी हैं, आप डांसर भी हैं, सो हाँ व्हाट्स जी. योर फिटनेस मंत्रा? क्योंकि आप हॉट भी है और क्यूट भी है, सो क्या फिटनेस? I think dancing is my fitness mantra, I would say. And apart from that, I do a lot of body weight exercises, and I just love playing sports. So वो मैं खेलता हूँ. I don't follow any diet. मतलब I just nowadays, like off late, I have become mindful in terms of अगर मेरा ज्यादा physical activity नहीं हो रहा है, so I'm eating जबरदस्ती है, मैं ज्यादा नहीं खा रहा हूँ जितना रिक्वायरमेंट है. बट अगेन नॉट दोज, आई एम नॉट वन ऑफ दोज जो मेजर करके खाता है कि इतना प्रोटीन इनटेक, इतना कार्बोहाइड्रेट्स और ये वो. आई एम नॉट दैट, आई एम दोज काइंड ऑफ पर्सन. सो मैं खाता हूँ, बट इट इज माइंडफुल. अगर मैं नहीं कुछ काम कर रहा हूँ, ज्यादा स्ट्रेस में नहीं हूँ, बॉडी इतनी रिगरस वर्कआउट या कुछ नहीं कर रही है, सो आई ईट, ट्राई टू ईट एवरीथिंग एट टाइम्स. जस्ट बी माइंडफुल कि कम खाना है, बिकॉज मेरी बॉडी फिजिकली बॉडी इतनी कुछ कर नहीं रही. So what's your favorite go-to food or snack? गो टू मूढ़ी, झालमुड़ी. वर्ल्ड कप चल रहा है, क्या लगता है यस, कौन जीतेगा? डेफिनेटली इंडिया के चांसेस बहुत हाई है. आई थिंक अगर ये मोमेंटम मेंटेन करेंगे हम लोग, तो वी आर टफ टीम टू बीट. Who's your favorite player? माय फेवरेट प्लेयर, जडेजा. So any message for your fans?
Firstly, I will just say thank you so much for always giving so much love. It means a lot. अगर आपने कैंपस बीच नहीं देखा है, then do watch it. Season 1, season 2 दोनों drop हो चुके हैं, and we have been getting a lot of appreciation for this show. And what else, man? I promise you guys to keep entertaining you as much as I can and give my more than 100% in whatever project that I come up with. So thank you once again for all the love, and love you guys. And before we end, one more question. हीरो बनना है ये बचपन से ही था? नहीं, नहीं, कभी सोचा ही नहीं था। मतलब एक्टिंग में तो कभी सोचा ही नहीं था कि आऊंगा। आई वाज ऑलवेज इनटू बिहाइंड द सीन करूंगा, कुछ कोरियोग्राफीज एंड एवरीथिंग, दैट वाज माय फोकस। बट देन रियलाइज बहुत ज्यादा अजीब सी मेहनत है, आई मीन इन कोरियोग्राफी, टू get recognition and get chance. So I dropped that idea. I was just dancing with no direction ki kya karna है exactly, and then acting project happened, like Dil Dosti Dance happened, and that is when I got introduced ki oh wow yaar, my new passion is acting as well, and dance bhi karne ko mil raha hai, acting bhi karne ko mil raha hai, seekhne ko bhi mil raha hai. Then I explored choreography there, वहां पे chance मिला show में करने का. So I never thought कि hero बनना है, like, never thought. Thank you so much, Shantanu, for joining us, Thank you, for your Fazia. time, and all the best for your future projects. And we are just hoping to see you more and more and more. Thank you so much, and thank you for this interview. Have a lovely day, and as I said, Same. next time मिलते हैं जल्दी.